So we are all here, I think. If before we start, can we all come on our videos and so that we can all see each other and talk to each other? As usual, we want our trainings to be, as interactive as possible. So please keep your videos on, all of you, and then we can start. Once you settle down, maybe you can switch on your videos. Maybe we can take 30 seconds, waiting for everyone to join in. Prerna ma'am, Akanksha ma'am, Priyanka ma'am, are you having any difficulties or can you also come with your videos on? Charu ma'am also. Yes, ma'am, my Wi-Fi is not working, so I'm using through mobile data, and so if I'll turn on my videos, I won't be able to hear you properly. Okay. What about Prerna ma'am and Priyanka ma'am? Ma'am, in this I'm facing some issues joining from other device. All right. Akanksha ma'am, Seema ma'am, please come on, huh? So that we can start also, right? I think rest of us are all here. Akanksha ma'am, are you there? Yes, ma'am. Okay, so maybe please come on and maybe a couple of minutes. I think if you're taking 1 or 2 minutes to settle down, karke please aa jaiye. It's a little important for us. I think as teachers, we are all also in the process where our classes, the main kind of a thing that we talk about is that it should be a participative kind of environment, no? Interactive kind of a thing, not really a one-sided thing. So ideally it should be that we are all in the same place, but till that can happen, at least videos can help us a little bit, at least that we feel like we're talking to each other. So good afternoon to everyone. I think we started with some conversations last year. We've started some process. We've tried out some things. बच्चों के साथ क्लास कैसे होना चाहिए, पढ़ाई मतलब मैथ्स के बारे में अगर बात करते हैं, नंबर्स के बारे में अगर बात करते हैं, दूसरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, how do we feel that how we think that those things should be done in the classroom. We not only talked about it, we tried out a few things with our children also. We could see the responses of our children. We could also see how children, parents, how they were all kind of also participating in the thing. So now at the start of the new year, we are now sort of thinking about how we can take this forward, right? Take this further. So I think one thing in front of us is that the children that we are all dealing with are all from are all really young, at a very young age that we are talking about. So for the kind of the world that they inhabit, the kind of the way they look at things is quite different from the way we also
maybe see things. And when we are bringing them into the school, many of them coming, into the classroom. So it's not just a question of maybe looking into a maths kind of a thing. It's also the question about overall, how do we also see the kind of the thing for children. So keeping these very young children in mind, how do we see it? What are how should the class be organized so that we can bring children of this age into the process? No? So क्या क्या चीजें होना चाहिए, क्या क्या aspects होना चाहिए उसके अंदर? I mean, you've all been engaged with children for a long time, so I think you can all share. I don't know whether my question was clear, what I was saying. So, was it making sense? Nimmi ma'am, जो हम बोल रहे हैं? I don't know. Could you all hear Amrita properly? I think teachers are. Ma'am, can you repeat your question once? Yeah, I think Amrita, your voice. There was some network also Yeah. shared. Okay. Okay. Sure. So we are, I mean, the kind of children that we are all dealing with are all, say, 3.5, 4.5, 5.5, at a very, very young age, right? And at this age, the kind of the world that they inhabit is itself quite different, no? Isn't it so? Ne? So when we talk about learning, the teacher, the kind of bringing them into the classroom, the learning process, thinking about how we should make the classroom more effective, the more kind of, where they can all engage and where they can all participate in, we have to plan quite differently. It's not similar to how you would do it, for example, with children who are maybe in primary classes, right? काफी अलग है ना उससे, नहीं? Pre-primary के बच्चों के साथ करना, it's quite different, isn't it? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So अगर हम ये छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, if we look at it, so what are the kind of things that we need to keep in mind? क्या क्या चीजें हम करेंगे? How do we plan our classes so that we can really make it more kind of a, this is what we are all intervening in, right? This is what it is about, the kind of our program or whatever you want to call it. This is kind of the purpose also, to make our teaching learning process a more effective kind of thing. तो कैसे करना चाहिए? अगर हम इन बच्चों की बात कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए? How do we do it? What should we keep in mind? Ma'am, more hands-on activities, more engaging activities, and more hands-on activities, ma'am. More of experiential learning. Okay, so more hands-on activities, more experiential. I think we all know that bachon ko, when we give them something in their hand and then they are doing things with it, the kind of engagement becomes very, very different rather than if it is just, something that we are, yeah. Okay, so apart from, okay, hands-on activities and experiential, yes. We have to plan the activities in such a way that they become very interesting and exciting for them, because only then they will give their interest. And it has to be very colorful and exciting for children for this age group. Yes, so that is precisely the question. Na? So now if we want to make it very exciting, engaging, जो भी words हम use करना चाह रहे हैं. So if we want to make it like that, क्या करना चाहिए? उसमें क्या elements हो सकता है? One is that it's hands-on. There are hands-on kind of, there's a large hands-on component. Okay. What are the other components? जो आकांक्षा मैम ने अभी बोला, उस तरीके का होना है. तो फिर क्या? What are the kind of elements that we need to bring in? Things which are easily available and which they can relate to. Okay, so one is that in the hands-on component, also the materials that we are using should be more, things which they can relate to. Sure. The material which we will be using has to be very colorful, and we have to create that excitement in them by showing them the material, and we have to pre-plan these activities. We have to keep the material on their tables, and we have to just have to set them free so that they can observe and see the material that they have on their tables, and they can explore it more.
Okay. And two-way Sure. communication should be there. It's not like a teacher is only delivering the lesson and kids are only listening. That kids has to participate in the lesson. That is more effective. Then only it's more effective. Absolutely. It's for doing. Couldn't hear you, ma'am. Can you Ma'am, repeat? the activity has to be more relatable so that the child can relate to his or her daily ongoing life, and they can be more interested in it. Okay. So activity has to be relatable, meaning? Meaning we did the previous activities related to the doll Amu and the story, thirsty crow. So these are all certain things that the child has somewhere heard from their mom or maybe grandparent. They've heard the story, and for that doll Amu, everybody has a doll or maybe some toy to play with. So that becomes relatable. They experience it in their daily life. Yeah. Nimbi ma'am, आपके साथ में कोई है ना? I think who is speaking? Yes, ma'am. We are Yes, curious yes. to know who it is. Actually, ma'am, we are sitting in social distancing. Na? So Fine, fine. You can just share who it is. that's why I was speaking from behind the camera. We can't still see you. I'm Who Manisha, is ma'am, speaking? this side. Manisha ma'am. Right, right. Okay, okay. Hi, hi. There was no space to sit together. No problem. No problem. No, just wanted to know. Curious to see who Yes, it was. ma'am. That's all. Sure. Hi, ma'am. Thank you. That's right. Okay, thank you, Manish ma'am. Of course, there are hands-on activities, but also the kind of context that we are setting up when we are bringing in these hands-on activities. Maybe it's through a doll which everyone has, or it might be through a story which everybody knows. Can be even a new story, right? No? What about stories? What do we think about stories in general for young children? No? They love the stories. Yeah. And अगर कुछ भी relate करना हो story से, that is every time it's good. So stories and context play a very, very important role at this stage, right? I mean, they play a very important role later on also, but at this stage, in a very kind of a specific way, they kind of they play a role. So, and in one sense, if we look at it, the kind of things that we're talking about, no, hands-on activities karna, whether it is with the clay or with some other kind of a things, with making something. So, or for example, or bringing in story. So actually, we see that in at one level, at this in the early years, we can't really separate and talk about आज हम number को करेंगे, आज हम इसको करेंगे, आज हम उसको करेंगे, right? आज language का class होगा, आज इसका class होगा. Somewhere at that age, shayad it's also connected to the way children also experience things, and it's also connected to the way things come in also for them, that these all need to be planned somewhere, looked at and taken up together, right? So these are maybe some aspects which we have talked about and which we would like to come back to. And when we think about, for example, how do children even look at something like, say, numbers or shapes, we see that somewhere they're also not coming in a kind of a very separate way. So today, I think what we are going to probably be talking about is maybe look at some activities, maybe think about how children experience them, and what we need to do. I think as all of us are saying, what we need to do to make the engagement really that kind of a process for children, right? For our children. So, Shubhamita, what do you think? Shall we start with a small activity and then maybe we can continue? Or please, would you like to add on before? Please. Hello. Yeah, we can hear you, Shubhamita. Huh? Okay. We can hear you. So, Amrita, shall we start with us, because we were talking about stories and context. Shall we start with a small, maybe not story, maybe a situation? So I think in last parent interaction,
Few of you were there also. Now some teachers were also there in that parent interaction. So it may happen that the story is little familiar, but that's okay. I think we all can also listen to the same story again. I think I have some internet issue here. So please tell me, okay? Let me know if my voice is breaking or anything. We'll do that. There is some lag, I think. Okay. Shubhamita, we can hear you perfectly well and see you perfectly well. So please proceed. And if there is an issue, we'll let you know. Okay. So we'll start with a small story. Can you guess what I am trying to make? I'm trying to make something. These are Aakar Parivar pieces. I hope you all have Aakar Parivar kit with you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So I'm also trying to make something with Aakar Parivar. Can you guess what I'm making? Any guess? Anything? कुछ भी. Girl. आपको पता था मैम? Okay. किसी ने kite or child? Child. Okay. A girl child. A girl. Yes. So मैंने एक छोटी सी लड़की बनाई है. इसके दो छोटी भी बना दो. तो ये है एक छोटी सी लड़की. इसका कुछ नाम भी रख सकते हैं हम. क्या नाम रखें? अम्मू. अच्छा ठीक है. तो वही ये हमारी अम्मू है. तो ये है हमारी अम्मू. तो एक दिन अम्मू जो है, एक दिन अम्मू सुबह बिल्कुल सुबह नींद से उठ गई. और आजकल मौसम बहुत अच्छा है, आप लोगों ने देखा है ना, सुबह इतने ब्राइट होते हैं. और जब सुबह उठकर देखा कि बिल्कुल सूरज जो है वो बिल्कुल ऐसे इट्स अ सनी ब्राइट डे. ऐसे सूरज बहुत ज्यादा तेज है. तो उसको तो बहुत अच्छा लगा. तो वो बिल्कुल बाहर गया, अपने बालकनी से बाहर गया. बहुत खुश थी अम्मू. और अम्मू ने देखा बाहर काफी सारी छोटे छोटे चीजें हैं. तो सबसे पहले अम्मू ने देखा कि अम्मू के वहां पे बालकनी में काफी सारे गार्डन में काफी सारे ग्रीनरी थे. तो अम्मू ने सबसे पहले देखा कि अरे देखो, कुछ एक बहुत ही छोटा सा कुछ आया है यहाँ पे. तो पता है क्या था वो? दिख रहा है आपको? बहुत छोटा सा एक, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल छोटू सा. कभी सुबह Ladybug. बिल्कुल छोटा सा एक चिड़िया, बहुत छोटी सी. पर अम्मू की उसकी आवाज सुनाई दिया. अम्मू सुन रही है, ध्यान से सुनाई दिया, तो उसको उसकी आवाज भी सुनाई दिया. तो अम्मू ने देखा एक छोटी सी चिड़िया आई है. और फिर अम्मू खेलने लगी बाहर अपने गार्डन में. तो उसको कुछ और दिखाई दिया. क्या दिखाई दिया होगा? कुछ जा रही थी मिट्टी पर, उसको कुछ, हाँ, तो उसको दिखाई दिया कि अरे यहाँ पे तो एक छोटा सा कैटरपिलर भी है. तो अम्मू तो बहुत खुश हो गई. वो उसके पीछे पीछे फिर भागने लगी. फिर उसने फिर से देखा कि चिड़िया आ रही है, तो वो चिड़िया के पीछे भागने लगी. पर चिड़िया तो उड़ गई. तो उड़ के वो दूसरे पेड़ पे जाके बैठ गई. तो अम्मू उस दिन बहुत खुश थी. पर अचानक अम्मू ने देखा कि वो जो सूरज इतना ज्यादा चमक रहा था और इतना रोशनी था बाहर, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं से क्या आने लगा? दूर से आसमान में बादल. थोड़ा अंधेरा होने लगा और एक बड़ा सा बादल आकर सूरज को ढक दिया और बिल्कुल अंधेरा हो गया. तो अम्मू ने सोचा, अच्छा अभी तो इतना सूरज था. तो अम्मू थोड़ा सा दुखी हो गई. सोचा अभी इतना ज्यादा बादल आ गया तो क्या होगा बादल आने से?
क्या हो सकता है? हाँ, बारिश, आंधी भी आ सकती है। आजकल तो आंधी का मौसम है दिल्ली में, इतने अभी पिछले 2-3 दिन से आंधी भी आ रही है, तो आंधी भी आ सकता है। तो अम्मू ने सोचा अच्छा अब तो मुझे घर जाना पड़ेगा शायद। तो अम्मू सोच रही है कि पता नहीं क्या होगा, बारिश हो जाएगा या आंधी हो जाएगा, तो क्या करे अम्मू, अभी क्या करेगी, क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? जलेबी खाएगी? अच्छा, खा सकती है। पकोड़े, जलेबी पकोड़े, पकोड़े। पकोड़े खाएगी। और क्या करेगी अम्मू? तो अभी बाहर है अपने गार्डन में। समोसे, समोसे उसको कहाँ मिलेगी अभी? गार्डन में या अपने पड़ोस की पार्क में? She can call her friends. अच्छा, वो अपनी दोस्तों को बुला सकती है, बिल्कुल। और क्या कर सकती है? बारिश आने वाली है, बिल्कुल अंधेरा है बाहर, अभी जैसे परसों शाम को हुआ था, आपके वहां पे भी हुआ था। तो क्या बच्चे क्या करते हैं? बाहर है, She needs an umbrella. मे बी शी नीड्स एन अम्ब्रेला। तो अब छतरी लेने के लिए वो क्या करेगी? मम्मी को छतरी तो यहाँ पे नहीं है अभी उसके पास, ट्री के नीचे चली जाएगी। तो शायद वो अपनी घर जाएगी। हाँ सॉरी गरिमा मैम, मैं यस। कह रही थी कि वो ट्री के नीचे खड़ी हो जाएगी थोड़ी देर। हाँ, शायद वो एक ट्री के नीचे जाकर खड़े हो जाए, है ना? सो अभी हम सबके कुछ कुछ अलग अलग सोच आ रही है ना। किसी को लग रहा है शायद वो पकोड़ा खाएगी या समोसा खाएगी, जलेबी खाएगी। अच्छा है, लंच के बाद वैसे खाने का याद आ रहा है सबको, कुछ ऐसे खाने का। पर उसके लिए तो उसको घर जाना पड़ेगा। शायद वो अपने दोस्तों को बुलाएगी और दोस्तों को लेकर जाके समोसा पकोड़े खाएगी। शायद एक पेड़ के नीचे चली जाएगी या एक अम्ब्रेला चाहिए। तो जो भी हमारे मन में आ रहे हैं इस सिचुएशन में, क्या हम वो बना सकते हैं आकार परिवार से? हाँ, यू हैव आकार परिवार, एनीथिंग which is coming into your mind ना in this situation। कुछ और भी जो आपने बोला है जरूरी नहीं है वही बनाना है, कुछ और भी आ सकता है आपके मन में। शायद वो कुछ और बनाएगी, शायद वो कुछ और करेगी, शायद अपने दोस्तों को बुलाएगी। एनीथिंग whatever is coming to your mind, shall we all try to make something with आकार परिवार? हाँ, बनाए। Yes, ma'am. ओके, सो मैं भी कुछ बना रही हूँ। यस वी कैन सी। ये कौन है? नेहा है शायद ये जो बना रही है। इवन यू कैन चेंज योर कैमरा सो दैट वी कैन ऑल कैन सी ईच अदर। थोड़ा सा अगर कैमरा का पोजीशन चेंज हो सकता है, दैट विल बी नाइस। इफ यू हैव अ स्लेट दैट विल बी नाइस। अगर आप स्लेट के ऊपर बनाएंगे तो थोड़ा पानी यूज करेंगे तो वो स्लेट को ऊपर करके भी आप दिखा सकते हैं। वी कैन सी द वे अमृता इज मेकिंग ऑन अ स्लेट। हाँ पूजा मैम, हमने देखा है आपने कुछ बनाया है। Yes, we can see Neha is trying to make something with पूजा मैम कुछ बना रहे हैं, स्लेट भी आ गया है वहां पे। सब अलग अलग बना सकते हैं मैम। आई थिंक 3 टीचर्स आर सिटिंग टुगेदर, वी कैन सी।
beautiful. Our Amu has made a boat. Amu has made a boat. Yeah. Acha. And you have also made a Yes. boat. Brenda ma'am is speaking on mute. Yeah. I made ice cream. Seems like a nutty ice cream, huh? Upar aake. Yes, ma'am. We have made a softie and umbrella. Okay. Charu ma'am, can you just bend it a little bit? We can't see it properly. Huh. Softy and umbrella. Okay. And we made a tree and an umbrella. A tree and it looks like a very interesting kind of tree, Shubhamata. Pooja ma'am is showing. Pooja. Yeah. हाँ So, बिल्कुल है ना? बिल्कुल So Ammu is playing with विजय his लक्ष्मी मैम की friends कैमरा में भी under a कुछ tree. सॉरी मैम Ma'am, can you see my image? yes two children are there under the tree. Yeah, they're playing under a Yeah. tree. Yes, very A boy nice. and a girl. Yes. We can also see another tree here. Vijay Lakshmi ma'am ki यहाँ पे. Ma'am, made a scenery, tree, grass, clouds, and one house is there. Okay, very nice. And this tree is very different. And Pooja ma'am's tree was very different. कुछ और अच्छा नेहा ने भी एक ट्री बनाया. नेहा आपका पेड़ तो बहुत बड़ा है. Ma'am is very beautiful. Neha ma'am is very beautiful. इसमें मैंने कुछ fruits भी लगाने की कोशिश की है. शायद आम है. इसका कलर देख के लग रहा है. मौसम भी आने वाला है ना तो भी. मौसम भी आने वाला है. पूजा मैम आप भी अपना पेड़ दिखाएंगे जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे. And someone made umbrella also, no? Ma'am, I just dismantled. I'll just do it again. I'll do it again. Yeah. Ma'am, I think I tried to make this top. Sorry. Yes. Butta. क्या बनाया है शुभमता पूजा मैम ने वो Can you see that orange जो उन्होंने वो pieces लगाए हैं? Butta, yes, so interesting. Very interesting. बहुत अच्छा है. अच्छा तो अच्छा नेहा मुझे ऐसा लग रहा था कि जो आपका पेड़ है और जो विजयलक्ष्मी मैम का पेड़ है ना वो लगभग एक ही जैसा दिखता है. मतलब आप लोगों ने बिल्कुल सेम जैसे पीसेस इस्तेमाल किया है. कैन यू शो अस ऑल ऑफ अस नो मैम. Can we spotlight both of them, Amrita, if you are the host? No, Neha and Vijay Lakshmi ma'am. Two trees. Yeah. तो हाँ तो दोनों पेड़ हमें दिख रहा है ना. तो आपको क्या लग रहा है कौन सा पेड़ ज्यादा बड़ा है. नेहा का पेड़ ज्यादा बड़ा है या विजय लक्ष्मी मैम का पेड़ ज्यादा बड़ा है. नेहा का. Yes, we can now see Pooja ma'am's tree also. तो पूजा मैम का ट्री भी अमृता प्लीज स्पॉटलाइट हर ट्री. So we can see this is the way children make different designs and we can have a discussion on with them कि अच्छा आपने क्या बनाया कैसे बनाया. और देखो तीनों ने पेड़ बनाया लेकिन कितने अलग है. तीनों का पेड़ ना कितना अलग अलग दिख रहा है. और हम ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा आपके पेड़ तो काफी बड़ा है नेहा और पूजा मैम आपका पेड़ भी मतलब बड़ा ही है क्योंकि दोनों बच्चे उसके नीचे खेल रहे हैं.
पर पूजा मैम की पेड़ में देखो, हाउ मेनी पीसेस आर देयर पूजा मैम? ओनली 2 pieces are there. Only 2 pieces are there in your tree. But you see विजयलक्ष्मी मैम आपके पेड़ में तो काफी सारे हैं, and विजयलक्ष्मी मैम के पेड़ एक फूल की तरह भी दिख रहा है ना. It's very that way कट किया हुआ है ना, newly trimmed tree. So इस तरह से हम काफी सारे बातचीत कर सकते हैं. So मैंने भी कुछ बनाया है. मैंने एक अम्ब्रेला बनाया है. जो बात हम कर रहे थे कि, और आप लोगों का जो सजेशन था कि शायद अम्मू को एक छतरी की जरूरत होगा, तो मैंने अम्मू के लिए एक अम्ब्रेला बनाया है. सो मेरा अम्ब्रेला जो है वो क्या लगता है आपको? ठीक है, सही है, अम्मू के लिए हो जाएगा, या छोटा है, बड़ा है? सही है, अम्मू के लिए बिल्कुल परफेक्ट है साइज इसका. सो मेरे अम्ब्रेला जो है ना उसमें कितने पीसेस है, मैं एक बार चेक कर लूं. आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पीसेस है. सो मेरे अम्ब्रेले में तो 12 पीसेस है. आप में से कोई है जिन्होंने मेरा बराबर टुकड़ों से कुछ बनाया, जो पेड़ बनाया आपने, या फिर पूजा मैम आपने जो बच्चे बनाया, या आप लोगों ने जो अम्ब्रेला बनाया था? कोई है? Anyone who has equal pieces? अच्छा, तो भुट्टा में 10 पीसेस है. Yes, ma'am. आपको कैसे पता चला मैम? I counted. आपने पहले काउंट कर लिया था? आपने जो बोला उसके बाद I counted. Okay, you counted. Okay. Anyone who has equal pieces? कोई है इससे बराबर, बिल्कुल मेरे बराबर पीसेस जिनके पास है? और कोई है? अच्छा, कौन है जिसके पास मेरे से ज्यादा टुकड़े हैं? ऐसे कोई है? नहीं, विजय मैम आपके ट्री में कितना था? नेहा के पास तो ज्यादा है. यस. कितने हैं नेहा आपके ट्री में? पीसेस मैंने 12 पीसेस यूज करे हैं. Oh, you also have equal pieces. You also have 12 pieces. Yes. और कौन है जो बिल्कुल सेम है, मेरे जैसे ही है, जिनके पास 12 पीसेस है? ऑलमोस्ट है, मतलब मेरा 12 नहीं है, मेरा ऑलमोस्ट 11 है. आपने क्या बनाया अमृता? ये 2 बोल है. हाँ. और ये एक प्लेट है पानी पूरी का. ये पानी पूरी बहुत अच्छा है. तो आप मेरे बड़ा अच्छा, ठीक है. तो बच्चे पता है क्या करते हैं ऐसे क्लास में जो बना दूं? और ये बोट का ही थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकती हूँ. हम लोग क्या करते हैं? We have 30. Ma'am, we have 34 pieces. 30 more than 30. Yes. ओके, अच्छा. आपके पास तो बहुत आप दिखाएंगे मैम आपने क्या बनाया है? Can you see a house with a window? A girl. And a tree. A purple tree. Yeah, and that has 34 pieces. तो आपका तो डिजाइन काफी बड़ा है. But ma'am, how many pieces are there in that tree? Will it be 12 equal? Yes, ma'am. How many? I am saying वो जो आपका tree बनाया है ना, उसमें कितने pieces होंगे? Will that be equal to 12? More than 12. I've counted. 19. That's also more than 12. Okay. Yes. तो जैसे अमृता ने बनाया, तो अमृता ने एक पानी पूरी का स्टॉप. मैंने ना एक और बोल रख लिया है, वो पानी रखने के लिए ना, पानी पूरी का. अच्छा. तो फिर अभी 13 हो गया. अभी 12 हो गया. 12 हो गया. तो अमृता ने बराबर कर लिया मेरे से. पहले नहीं था, लेकिन उसने 12 का बना लिया. मैं होती तो एक और पानी पूरी रख देती उसमें. वो 6 ही आता है एक प्लेट में. अच्छा. This is also contextual, ना actually. सूखी पूरी भी मिलती है अमृता, so just. ठीक है, वो कर सकते हैं. Okay. So and then the conversation can continue. अभी हम शायद टाइम को देखते हुए भी यहाँ पे रोक सकते हैं.
and then we can talk that what was happening. क्या लग रहा है आपको? क्या हो रहा था? हम पानी पूरी बना रहे थे, पेड़ बना रहे थे, अम्ब्रेला बना रहे थे, क्या हो रहा था? अगर हम बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा? Hands-on activity with shapes. Second is we were doing counting and estimation was also there. Hands-on activity, yes, counting and estimation. Achha. Using of different shapes. Yes. Maybe हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा. Host, if you can enable the screen sharing. Who is host? Amrita, are you host? I just realized. Supriya, please go ahead. Now I think you can. Okay. So maybe you can just write here what we all are saying. So you are saying this is hands-on activity and counting, playing with shapes. Please correct me if playing with shapes. And kuch aur? Counting and estimation. Means we were Counting estimating. and okay. Counting and estimation. Okay. Anything else? Imagination. Identification and recognition of shapes. Communication and sharing also. Communication and sharing of thought also. Hello. How to, ma'am, pattern use? Pattern. You said that communication and sharing. So sharing, conversation. Shall I write conversation? Sharing of thought. Sharing of thoughts. Sharing of thoughts. So that means जो बच्चे बना रहे हैं ना, उसके बारे में बच्चे बोल सिर्फ बना नहीं रहे हैं. That means they are not only doing, they are also sharing what they are thinking, है ना, and what they are making. So क्योंकि जब हम कहानी भी कर रहे थे, so it's not only as you also said ना in the beginning that it's not एक class का मतलब क्या है? It's not only the teacher is saying, rather it's not one way communication, it's both way communication where teacher and children both are in a conversation, in a meaningful conversation ना. So sharing of thoughts जो आप बोल रहे हैं. You also said something you also said which I missed. Identification and recognition. We couldn't hear you, ma'am. Can you repeat? Identification and recognition of shapes. I think identification and recognition of shapes. वो playing with shapes के साथ लिख सकते हैं, I think. है ना? तो एक तरह से, but अगर हम देखें, so these all are coming through a story ना, or maybe through a conversation. The teacher is not saying कि अच्छा okay मैंने एक semi circle रख दिया या फिर see this is a circle I have used for Suraj ना. You are just making the and even when you are making tree or umbrella, when children are making tree and umbrella, children are making tree only. Children are not thinking about shapes when children are making tree or the ammu or the house or umbrella or anything else what they are making or what they make. And counting is coming very subtly, very indirectly. Like counting is not
the main purpose of the activity. टीचर पूछती है कि मैंने तो 12 टुकड़ों से बनाया, तो क्या कोई है जो मेरे से बराबर है, जो मेरे से बराबर टुकड़ों से कुछ बनाया. So just to check कि अच्छा मेरा मैम के साथ बराबर है कि नहीं, टीचर चाइल्ड इज काउंटिंग, ऑल चिल्ड्रन आर काउंटिंग. टीचर डज नॉट आस्क के अच्छा आप काउंट करो. वो सीधा ऐसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि आप काउंट करो. So it is mainly about creating something with these shapes, इसको एक्सप्लोर करना और जो भी वो बना सोच रहे हैं उसको बताना, उसको बोलना. अमृता, यहाँ पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? अमृता नेहा, I can't see many people. Shall I stop share? I think as we were talking in the beginning also, na Shubhamita, maybe the fact that in this one activity, as all of us are saying, so many different elements which are actually coming in together, right? And shayad the way numbers came in, maybe we children may not even notice, right? May not even realize that or when Shubhamita asked the question, and I think was it Pooja ma'am who immediately said ki in our bhutta there are 12. Aapko, did you realize that you were counting and doing it? Did you think of it as a did you realize at the time that there was counting going on? No, when I made the count down, but yes, when ma'am counted down after that. Yeah. And many of us did immediately. Na? As soon as Shubhamita said something about it, all of us, I think, immediately started looking at our pieces and seeing how much it was, right? So there was not even the need, even before she asked the question itself, already we are all kind of looking at our the designs in that kind of light and talking, looking at it and counting and checking. So the way that is brought in, right? So like we are saying, maybe children wouldn't have realized that there, if we ourselves didn't realize, they would not have realized also, right? That this is would they have realized? Do you think the children would think of this as a what shall we call it, a counting activity? Do you think children would realize that इसमें counting हो रहा है? No, I don't think so, ma'am. They will be realizing that they are actually counting when they are doing some activity. No? What do others feel? जब कर रहे हैं, Same, शुभमिता बोल रहे हैं कि अच्छा, हाँ? हाँ, same. They will not realize that they are doing counting. Yeah. So is that okay? That they don't realize? This is the best technique. Maybe you can say something a little bit more, ma'am. Why do you feel this is best? Vijayalakshmi ma'am, if you can just elaborate maybe what do you mean by saying that this is Actually, when kids learn more when they don't realize, and the thing is, when in the numeracy, mainly numeracy is a skill. When they don't realize the things, they can interpret that thing also, and they can use those things also in their real life. That is a main skill for the numeracy. So this is the best part when they are not realizing also, and they are learning also, and they are using these capabilities in their real life also. Yes, ma'am, and is a play-based learning where they are learning also and they are not realizing it. अगर हम उनको बोलेंगे let's do the counting, so they are not that much interested that today we are going to learn counting. Is okay, अरे ma'am is going to teach. And they will say that ma'am is doing same counting. thing daily. She is repeating same thing Okay, daily. it's boring that ma'am will teach counting today. But yes, this is a new way of teaching that we are doing the counting, we are teaching the counting, but they are not realizing it and they are learning also. So this is the best. And learning and enjoying. And enjoying Main also. part is that they are enjoying. When they will enjoy, they will learn more. Absolutely. No? So I think it's also very interesting to observe then what is the role of the teacher. No? Now, for example, when Shubhamita was also doing the activity with us, if she had not maybe made all these things, no?
if she had maybe just talked about all this, ऐसे ही सुना के बोल देते कि अच्छा आप बनाओ, या फिर ऐसे ही दे देते आप बनाओ, या फिर बोल देते अच्छा कि सभी बनाओ, everybody make something, and then has anybody made with more than 12 pieces. So even then it would have been hands on, but do you think it would have been the experience would have been similar? Ma'am, it broadens the imagination of the children if we are giving some examples. So they are from that they will be using their imagination, and then they will be applying theirs and maybe creating many new things from it. But for that they just need a support and an example. Yeah. Yeah, I don't know whether we want to call it an example, but more like Shubhamita was building, like you're saying, she was building up our imagination. Na? She was sort of pushing our imagination in a certain direction. So she started talking about Ammu, and then वो तितली आई bird के पीछे घूमने लगी, फिर वो caterpillar भी आ गया, caterpillar के पास चले गई, फिर कुछ और हुआ. So we are all, our imagination is all being sort of, she's taking us along without even, again, we didn't realize, right, that we had got lost in her story. Maybe also we didn't realize, or that there was something very specific that she was going on. But at the same time, so she was doing that, and even afterwards, while we were all also making, she is also making something. That makes actually a lot of difference, right? So as a teacher, one is not standing separately, and like you were saying, na, like somebody just said, I don't know who it was, जो अभी बोला था कि counting बोल के करेंगे तो boring है ना, right? Yeah, but Right, ma'am. no, but then somewhere ऐसे ही खुद बनाते बनाते शुभमिता ने कुछ बनाया और then she started talking about कि अच्छा इस पेड़ में ज्यादा है, इस पेड़ में ज्यादा है, तो कौन से पेड़ में ज्यादा है, कितने हुए थे उसमें pieces ना. So the question is also very natural. It's not, it comes in a very subtle way, quietly, and I think some of you were saying that that's probably kind of the thing, when चुपके से आ जाते जो चीजें, शायद वो हमारे साथ भी ज्यादा रहते भी है ना. Things which come in very quietly, I think, stay with us also. So so I think the way when we plan our activities is also, maybe we can think about how we can do it so that this whole, the way the questions come, maybe हमारे मन में counting है, हमारे मन में बहुत सारे, actually counting के अलावा भी बहुत सारा चीज हो रहा था ना. I think even if we're thinking about from the number perspective, even from maths perspective, maths के इसमें देखेंगे, ढांचे में देखेंगे, तो भी बहुत कुछ हो रहा था ना. Shubhamita, please come. Yeah, see, actually what Amrita did that time, na, or I think one of you also made a scenery and you counted. तो जो अमृता ने किया, एक्चुअली जब हमने बच्चों के साथ ये एक्टिविटी जब क्लास में करते हैं, so we also saw the exactly that thing. Many children, they actually जब आप ये सवाल पूछेंगे, जो टीचर पूछते हैं ये सवाल कि अच्छा मेरे बराबर कितने बच्चों ने बनाया है, so teacher is not asking for counting, पर बच्चों का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, मैम का बराबर करना है. So many children, what do? They try to, अगर उन्होंने suppose कि एक बच्चा ऐसा था जिन्होंने 8 टुकड़ों से एक घर बनाया था, so they added more. And before I ask the question, we also ask them to share what they are thinking. ना तो बच्चों ने बोला ये मेरा घर है, ये प्लेग्राउंड है, घर के साथ एक छोटा सा जगह है जहाँ पे मैं खेलने जाऊंगा. And then the child put some more pieces and said कि मेरा तो 12 हो गया. Yeah, that time I think it was 11, something like that. So then I said, but आपका घर तो पूरा complete था ना. तो फिर बच्चों ने कहा हाँ, फिर मैंने घर में थोड़ा और रूम बना लिया और छत में एक और घर बना लिया. So for the child, actually उसने उसका जो उस वक्त ऑब्जेक्टिव था कि उसको मैम के बराबर करना है. And for that, what he was doing, he was actually trying to modify his house, whatever he had made to with Aakar Parivar. तो ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं. जैसे एक बच्चे ने कहा कि अच्छा उसने भी 36 ऐसा कुछ बनाया था, as you made with 34 बड़ा सा डिजाइन. So I said अच्छा तो आपका काफी ज्यादा है मेरे से. And the child said, no, it is not more. Then I said, then the child said, it is actually more. So with the expression, so it's not only about counting, it's also how children are experiencing number. 12 उसके लिए थोड़ा सा ही है, 34 है तो बहुत है.
क्योंकि एक नर्सरी के बच्चे के लिए, केजी के शुरुआत में एक बच्चे के लिए 34 बहुत होता है, बहुत कुछ है ना। सो शायद बच्चे एक तरह से नंबर को इस तरह से भी देखने का एक मौका मिलता है इन एक्टिविटीज में। But I think one important point which you said now, because that time I could not see who was sharing, that sharing of thoughts, ये बहुत important है। जब बच्चों के पास, बच्चों ने बनाना शुरू किया है, from the first day we asked children what you have made, and they also create stories. बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कहानी भी बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं इसके साथ। शायद वो हमारे लिए कहानी नहीं है, शायद 1 line 2 line, but we know ना how children this age, इस साल के बच्चे कैसे कहानी बनाते हैं। So actually हम लोग अभी बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि how you know they maybe look at numbers, how they experience numbers, you know, how it can come in to their world, and maybe when we're talking about that, maybe we can take a couple of minutes to think about it कि actually अगर हम सोचेंगे, you know, अगर generally भी कि number आया कैसे होगा, कब आया होगा, किस लिए आया होगा ना। I mean to say कि in general, in sense historically. So humanity के इसमें, how do you think, where do you think numbers might have come from? Numbers तो came with us only, na? We only invented them, right? That much so I think we all, I think now it's well established kind of a thing. So किस लिए आया होगा? When do you think it might have got created, or what, for what purpose do you think it might have got invented? दुनिया में ही नंबर क्यों आया? Is what? Yeah, Amrita? Huh? Nimi ma'am is thinking something. Yeah. You can For share. counting. For counting. Okay. For counting what? Why do you think there might have been a need to count itself? Count कब आया होगा? objects. Okay. Okay. So what do you think? What do you think might have been the context or the need, or where do you think it might have come? Counting of objects also. Where do you think it might have? The need might have arisen. बहुत strange सवाल पूछ लिया. Yeah, Pooja ma'am. Yes. What do you think? Ma'am, can you please repeat your question? So we are saying कि बच्चों की दुनिया में कैसे आता है ना, number कैसे आता है, right? We've been talking about that. So how to bring children into the you know, how numbers can come into the world of children. So now I'm taking 1 or 2 or 3 or many steps back and saying कि अच्छा आपको क्या लग रहा है कि दुनिया में ही नंबर कैसे आया होगा ना? हिस्टोरिकली कभी तो आया ना? अगर हम अपने हिस्ट्री में जाके आई डोंट नो कितने साल पहले आया होगा, बहुत साल पहले, right? Very long back. Yeah. Very long back. Okay. So probably from prehistoric times, yeah, आया होगा. So आपको क्या लग रहा है कि किस लिए आया होगा? So somebody is saying कि counting. To know how much. Who has got how much? So there is a universal feeling in us, who has got how much, and then maybe two friends were sitting and somebody has more, someone has less. So they would have thought of counting it and knowing who has got more. Maybe. I like Pooja ma'am's imagination. Yeah, so two friends are sitting and thinking, okay, how much have each of us got? Yeah, sure. So probably the things that they had also at that time might have been very different from the things that we have right now, right? No? So I think one thing that we can say is that exactly how much पता करने के लिए शायद हमें करना पड़ेगा. But so for example, अगर हम एक ऐसे ही context बोल रही हूँ, ऐसे I'm just trying to imagine कि we don't know how their lives might have been at that time. But suppose, you know, in a long time back, अगर हम
उस टाइम के इस सिचुएशन को सोच रहे हैं. So maybe people had some, animals. They kept some animals for, grazing and then for getting their products and things like that. So maybe they wanted to keep track of how many they have, right? So, so for example, ऐसे like Pooja ma'am was imagining, I'm also imagining now. Suppose it went for grazing and then they came back from grazing, no? So if many went for grazing, like, more than 20, 25, 30, बहुत सारे गए, और शायद अभी कुछ ही वापस आए, maybe few ही आए. So क्या उनको काउंटिंग करने की जरूरत होगी उस टाइम पर, पता करने के लिए कि सभी आए या नहीं? Yes, ma'am, definitely. To keep track of how many have to come back. So somewhere we are seeing that when we are maybe when the differences are quite large or something, we might be able to say this is more or this is less. Like Pooja ma'am is saying, there are two friends who are sitting, and maybe if one of them had lot of cows and one had very few, then maybe they would not have needed to count, no? Right? They would have just looked at it and said, "Acha, inke paas mere paas to zyada hai." Isn't it so? But maybe if the numbers were kind of close, then it might not have been so easy. They may have to count and find out. So one is that even for us, I think, or even in general, somewhere we are seeing that numbers would have come, और शायद वो आया होगा, तो एक चीज कितना है, how much, ना? I think as all of you are saying, how much को पता करने के लिए कितना है. So एक क्वांटिटी सेंस के साथ कहीं पर क्वांटिटी को पता करने के लिए आया, right? नहीं? And maybe like we are also saying, even for very young children, if we ask them, if we show them like two piles, one would say कर भी सकते हैं, किसी के पास कुछ है. I don't know, Neha, do you have some blocks with you or something? You just show. Yeah, I have blocks. Just a second. So एक तरफ में इतना रखा है, और एक और पाइल भी बना सकते हैं, हाँ, ओके, नहीं काफी है, हाँ, राइट, आई थिंक या. तो अगर अभी हम ये दो पाइल्स को देख रहे हैं, so there is one pile which is with Neha's. नेहा आप हाथ रखेंगे एक पाइल के ऊपर. हाँ, इस पाइल में ज्यादा है या इस पाइल में ज्यादा है, दूसरे पाइल में? दूसरे हाँ, सॉरी, सेकंड में जिसके ऊपर हाथ है उनका, जिसके ऊपर हाथ है, जिसके ऊपर हाथ है उसमें ज्यादा है ना. अच्छा, हमने कैसे पता किया? How did we find out? That is the estimation. Just by looking, I mean quantity देखने से ज्यादा लग रही है. Observing, बस just by observing. Yes. Yeah. More area. Yeah. So, yeah. So somewhere, I think even if we ask very young children, if we show them this and ask them कि इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है, children would be able to say, very, very young children also. Yes, ma'am, if the difference is more. Yeah, right. So actually at one level, we are born with one sense of quantity. Na? We have a sense of quantity with us. And when the differences are large, we can just look at it and actually say. But अगर नेहा आप एक दो थोड़ा कम कर दो, थोड़ा सा पास में लेके आ जाओ. हाँ, तो हाँ, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. नेहा डिसाइड कर लो कहाँ पे क्या है. Yeah, okay. so अभी हमें पता करना है, तो can we just do it by looking at it? No, ma'am, we need to count. Now we need to count. Now we will need to count. Yeah. So when the differences become actually at this level, we need to count. Neha, can you reduce a few of them and just keep one pile? One pile you need. हाँ, और थोड़ा कम भी कर सकते हैं उसमें. Remove some of the blocks from there also. Yeah. Okay. और भी थोड़ा, हाँ. तो अगर अभी इसको देखना है, अगर इसमें और एक और शायद एक और थोड़ा सा पाइल भी. Anyway, what we're trying to say is that with small numbers,
And with small quantities, it's even more kind of a thing, right? When you look at it itself, you have a kind of a sense of actually how much they are. And for very young children also, they are able to actually find out how much they are. So this quantity sense that we have, and we are born with kind of a thing, if we say, and counting comes in to support the development of that quantity sense further, right? Beyond say 5 or 6 or 7 or 8, just looking at it visually or that sense that we have is not enough. We need to be able to count to actually find more precisely. Then we get a sense of actually how much 8 is. Na? So counting, in fact, एक level पर quantity के पीछे पीछे आता है, और फिर quantity को quantity sense को और बढ़ाने के लिए हमें counting को और भी करना पड़ेगा ताकि वो quantity sense शायद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद और develop करे. So at one level, what we are saying is that how when we ourselves, and even if we look at it, how the way the numbers emerged historically, that's a very interesting story. Maybe some other time we can talk about it a bit more also. And maybe some of the context, like the way we talked about, actually not too far from the truth also. थोड़ा सा actually ऐसे ही कहानियां शायद situation से आया है, ऐसा archaeological evidence भी हमें बताता है. So maybe we can talk about that some other day. But नेहा, आप इसमें थोड़ा सा और आगे बात कर सकते हैं. I think Pooja ma'am is also showing vlogs. Okay. Yeah. So अभी हमने थोड़ा सा ये बात की, right? We started with a small activity where we all were engaged and we all were also talking about बच्चों की दुनिया में क्या है ना. Children have stories, children have games, उनको खेलना है, उनको मजे करने हैं दोस्तों के साथ, है ना. तो जब बच्चे क्लास में आते हैं तो वो उस आइडिया से क्लास में आते हैं, और हम लोग जा रहे हैं तो वी आर ट्राइंग टू कीप दीज थिंग्स एट द कोर, और उसके अराउंड हम एक्टिविटीज को लेके जा रहे हैं ताकि बच्चे इंगेज रहे पूरे प्रोसेस में, है ना. देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि नंबर्स आए ही कहाँ से, है ना, दुनिया में एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर्स कहाँ से आई. तो अभी थोड़ा उसको और आगे लेके चलते हैं इसी आइडिया को. और एक इससे छोटा सा सवाल है, आप सबने हाथी देखे हैं? हैव यू ऑल सीन एलिफेंट्स? किसी ने देखे हाथी? टीवी में देखे हैं या रियल लाइफ में देखे हैं? रियल में देखे हैं. रियल में देखे हैं. तो कहाँ देखे हैं? मे बी एनीवन कैन शेयर. हाथी कहाँ देखे हैं? सड़क पे ऐसे मिल जाएंगे चलते हुए? सड़क पे भी आते मैम, पहले आते थे. पहले आते थे. अच्छा, तो कितने हाथी आते थे सड़क पे? एक ही आते थे, one. And they charge around 10 rupees for one round. अच्छा, ओ आप सवारी की भी बात कर रहे हैं, ठीक है. तो और हाथी, वैसे ज्यादा हाथी कहाँ पे दिखते हैं, कैसे रहते हैं हाथी? किसी को कुछ ग्रासलैंड में. ग्रासलैंड में. और तो अकेला दिखेगा वहाँ पे? नो, दे आर ऑलवेज इन ग्रुप. यस, हर्ड में आते हैं ना, ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है. तो अच्छा, अगर मैं ऐसे इमेजिन करते हैं थोड़ा सा, हाँ, कि अगर हम एक ऐसी जगह पहुंच गए, बहुत पेड़ हैं, बहुत हरियाली है, और उसमें कुछ हमें हाथी का एक झुंड भी दिख रहा है ना, और झुंड है तो कैसे, मतलब शांति से चल रहा होगा या क्या हो रहा होगा? क्या मैम, चारू मैम इज डूइंग द एक्शन. ओके, और क्या हो रहा होगा? बिल्कुल आराम से, कुछ आवाज दूर से पता चलेगा हाथी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. तो कैसी आवाज आएगी एक हाथियों का झुंड अगर आ रहा है तो? You can unmute and also try to make the sound also कि हाथी कैसे आवाज करते हैं. तो बहुत ऐसे जोर से ऐसे चिंगाड़ने की आवाज शायद ऐसे आएगी, हाँ, और बहुत सारे हाथी जा रहे हैं. तो अगर मैं आपको बोलूं कि 7 हाथी हैं उस झुंड में, बढ़ती जा रहे हैं, है ना. तो दिस इज वन आइडिया. अच्छा, मैं एक चीज और बोलती हूँ कि हम लोग सब खेल भी खेलते हैं ये, राइट. और अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चे खेल खेल रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, राइट, एंड देन दे सी कि अरे आज तो बहुत सारे दोस्त आए हैं खेलने के लिए, और काउंट करके उन्होंने देखा कि 6 दोस्त हो गए हैं मेरे, है ना. फिर उन्होंने बोला अरे मैं भी एक हूँ, तो 7 हो गए हम खेलने वाले.
ना, तो अच्छा तो 7 दोस्त हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक वी आर गोइंग टू प्ले। नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वहां पे भी 7 हाथी थे झुंड में, यहाँ पे भी 7 बच्चे हैं जो खेलने वाले हैं हाइड एंड सीक। व्हाट डू यू थिंक, बच्चों के लिए दोनों एक सा है? और यहाँ पे मेरे पास 7 ब्लॉक्स होंगे, तो क्या लग रहा है तो 7 ही ना सब जगह? व्हाट डू यू ऑल थिंक? बच्चों के लिए सब एक जैसा ही है? नो, अगर बच्चे जो है 7 हाथी के बारे में सोच रहे हैं या अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि 7 है, और जैसे पूजा पंडिता मैम निकाल रहे हैं अभी कुछ 7 ब्लॉक्स निकाल रहे हैं, क्या उनके लिए इसमें सब में दिखेगा कि एक जैसा ही है? What do you all think? Or you have seen children at nursery KG level? Different. Sorry? Pooja ma'am, sorry, can you please repeat? We missed. Yes, ma'am. Shape and size is different. So Shape and size is different, yeah. Pooja ma'am was also sharing something. Pooja Marwaha. I was Yeah? thinking that once we have talked about elephants, they will be only thinking about elephants rather than other things, and the size of the elephant and the hugeness which comes in the mind when we talk about elephants. So that. तो एक ये आइडिया आ रहा है कि साइज एंड शेप अलग होगा, एंड ऑल्सो वो इसमें भी होंगे ना कि हाथी कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या आवाज कर रहे हैं, सो मेनी थिंग्स। तो कर तो हम साथ ही रहे हैं ना, बात तो हम साथ ही कर रहे हैं, बट देन यू आर सेइंग कि बच्चों के लिए तो अलग है ये एक्सपीरियंस। और 7 दोस्त जब होंगे कि अरे आज तो खेलने के लिए हम सारे लोग आ गए आज मोहल्ले से, है ना, एवरीवन इज हियर फ्रॉम द कॉलोनी एंड वी आर गोइंग। Level will be different. If they look at 7 elephants, then they will be excited to see those 7 elephants. Very much excited. And mean excitement level will be different. And when they play with their friends, then their energy level will be different. That they want to play right now. That's all about playing and everything. So the whole thing is here is that अगर हम कोई भी एक्टिविटी, वी आर डूइंग एनी एक्टिविटी इन अ प्लेफुल मैनर, आई मीन इन अ डिफरेंट मैनर, that is more excited for the kids. So like when they see elephants, so they are very much excited to see those elephants, and they will count, yes, there are 7 elephants, and they will remember it for a long period in time. Sorry, Moments. can you share your name also? No, excitement level or energy level or the way they are participating in the activity also आइडेंटिटी, उससे भी ये जो शेप एक्सपीरियंस का जो नंबर का एक्सपीरियंस है वो शेप ले रहा है ना, कि हाथी देख रहे हैं। अच्छा जब 7 दोस्त की बात कर रहे हैं तो उन 7 दोस्तों में वो भी एक है ना, मैं भी एक हूँ, उसका पार्ट हूँ, पर 7 हाथी में तो मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ, वो 7 हाथी दूर है मुझसे, मेरी बॉडी से अलग है ना, पर 7 दोस्तों में आई एम अ पार्ट ऑफ दैट 7 का ग्रुप कहीं ना कहीं, राइट? तो नंबर ऐसे ही आता है ना दुनिया में, बच्चों के लिए भी, हम सबके लिए भी ऐसे ही आता है ना, कि अरे आज कितने बच्चे आए हैं मेरी क्लास में, अच्छा इतने बच्चे आए हैं, कितने लोगों के लिए हमें बैठने का अरेंजमेंट करना है, अच्छा टीचर भी तो बैठेगी, ओके, तो उसके लिए भी एक कुर्सी चाहिए ना, तो दैट्स हाउ नंबर आल्सो कम्स फॉर अस आल्सो, नो, फॉर एवरीवन। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अमृता वाज आल्सो शेयरिंग कि कहीं ना कहीं नंबर शुरू भी एक नीड से हुआ है ना, देयर वाज अ नीड कि अरे हम तो वी टुक एनिमल्स और फॉर ग्रेजिंग एंड ऑल, तो वापस आए तो लग रहा है कम है, लग रहा है ज्यादा है, देन देयर वाज अ नीड कि कुछ तो करें, तो काउंटिंग आई। पर अगर मैं ऐसे पूछूं आप लोग से, तो काउंटिंग आना मतलब क्या होता है? कि इफ वी आर सेइंग, अमृता वांट्स टू से समथिंग। No, I was just thinking कि I think what you were saying earlier ना about the fact that बच्चों के लिए तो शायद बहुत ही अलग है, right? In the beginning, I think especially for very young children, to see in an elephants कि okay, they may count and say there are 7,
And then in the friends also, they may count and say, okay, there are 7. Or the blocks also, they may be able to even count and say there are 7. But to somewhere from all of that to actually see the, in that sense, to focus on the 7ness aspect of it, जो बोल रहे हैं ना हाथी के बारे में सोच रहे तो हाथी ही होगा ना, because that context is something which plays such an important role for the child. They are not able to separate the number from that and see वो number उस रूप में उठ के नहीं आता ना, वो हाथी से वो उठ के नहीं आता, वो 7 हाथी ही है. And actually और 7 blocks है तो वो 7 blocks है. तो ये इसमें भी 7 है, उसमें भी 7 है, उसमें भी 7 है. To see the 7ness in the as a commonality in all this is actually quite, like you're saying, the visual size and things, that is a visual aspect of it, emotional aspect of it. So many things are for the child, are in their mind, that the number is a very small part of it ना बच्चों के लिए उसमें. तो जो ये अलग चीजें वो dominate करती हैं. But when children get many opportunities to see 7 in very different contexts, then somewhere उन सब से हट उठ के कहीं पर एक 7 का एक सेंस आ जाता है ना. 7 मतलब इतना, वो एक 7 का एक आइडेंटिटी जो है बच्चों को अलग से आ जाता है. You're able to see 7, okay, so 7 जो है इतना है, 5 से ज्यादा है, 10 से कम है. उसके पहले 7 हाथी 5 हाथी से ज्यादा है, at that level होगा. पर शायद 7 के बारे में अलग से सोचना बच्चों के लिए कितना, बहुत यंग बच्चों के लिए कितना हो पाता है. So for it to happen ना, and to come for us to see it in that kind of a formal way, logical way, जिस रूप में हम स्कूल्स में देखते हैं या मैथ्स के क्लास में देखते हैं, 7 को अलग से देखते हैं. 7 के लिए एक सिंबल लिखते हैं, राइट. 7 के लिए एक अलग से सिंबल है, तो एक 7 का एक अलग से एक रूप है ना, आइडेंटिटी है. For children to see that kind of a way, to see number in that kind of a way, they need to have a lot of different count in very different contexts for it to emerge. Until then, maybe they may not even find that kind of commonality is one thing that yeah. In fact, agar hum just sorry Neha, just one second, just to sort of also just think the point that even historically, in fact, with the way numbers existed, कि शायद ये था कि जब वो तेल का when the oil का barrel था या grains का sack था ना, so they had different counting numbers for oil का barrel and for sacks of grain. So they would count it with different kind of numbers. मतलब वो 1 2 3 बोलते थे तो यहाँ पर शायद कुछ और 1 2 3 या कुछ और ना, मतलब अलग अलग भाषा नहीं, अलग अलग नंबर का अलग अलग वर्ड्स ही था. So they did not even see कि अच्छा 3 oil barrel और 3 grains of sack, तो ये दोनों में 3 है. This kind of a one-to-one correspond, to see them in that kind of a thing, even historically it didn't exist when numbers originally emerged. This is actually one of the findings that we have now from looking at archaeological things. अगर देखते हैं तो actually even in our human civilization it didn't emerge. So for a long time people had different, जैसे measurement के लिए होता है ना कि आप जो है टेलर, बहुत पहले अगर हम देखेंगे इवन हमारे लोकल यूनिट्स में देखेंगे तो जो दर्जी जो गिनता है, नापता है, the kind of units the darzi might have used for counting, measuring the cloth, and जो land का जो measuring unit था वो काफी अलग था, right? Though you're both measuring length, but आपका units काफी अलग है. शायद number का भी ऐसे अलग अलग origin में, अलग अलग context में अलग अलग थे. तो बच्चों के लिए भी वो देखना कि वो सब एक साथ है might have taken a we can understand that it should take a long enough time. Yeah. Yeah, I think just adding to what Amrita just shared ना अभी, उन्होंने बोला कि बच्चों के लिए 7 हाथी और 7 ये गिनना बहुत एक अलग एक्सपीरियंस भी है. तो जब हम अभी जैसे शुभमिता ने हमें बोला नहीं काउंटिंग करने के लिए, पर हमने कर दिया, राइट. तो उसमें मैंने ये ट्री बनाया, so I'm counting a tree this time. So counting the trees 1 2 3 4 5 6 7 and I'm counting. And आप लोग को याद होगा, राइट, हमने दावत जब की थी, जब अम्मू को स्वागत किया था, तो वी मेड अ चेयर फॉर अम्मू टू सिट आल्सो, है ना. तो अगर मेरे को ये काउंट करना है तो क्या लग रहा है, लाइक फॉर अ चाइल्ड टू एक्सपीरियंस काउंटिंग दिस एंड काउंटिंग द ट्री, हाउ इज इट गोइंग टू बी? Is it going to be same? Is it going to be different? हाँ. और क्या आज जिस बच्चे ने अम्मू के लिए चेयर बनाई है, कल क्या वो कुछ और बना सकता है ना? कैन द चाइल्ड मेक अ ट्रेन फॉर अम्मू, और मे बी अ टेबल, चेयर के साथ के लिए टेबल बना सकता है ना. और हम लड्डू भी गिनते हैं, अम्मू के लिए हमने लड्डू भी बनाए थे,
So counting laddu, counting the blocks in your chair, counting the number of mangoes in my tree or the number of pieces in my tree. और ये भी है ना कि अलग अलग दिन बच्चे अलग अलग चीज बनाएंगे ना, ऐसा पेड़ बनाया तो कल भी पेड़ बनाएंगे, राइट? सो द आइडिया समवेयर, ऑफ कोर्स अब हम हाथी तो क्लास में नहीं ला सकते हैं, है ना, बिकॉज आप लोगों ने ये भी बात बोली कि वेयर चिल्ड्रन आर एंगेज डूइंग थिंग्स विद देयर हैंड्स, है ना, और वो कर रहे हैं चीजें, तो यूजिंग दीज थिंग्स समवेयर टू काउंट डिफरेंटली also helps to develop that idea of numbers somewhere, you know? So I think Amrita, moving a little forward, shall we okay, तो अभी एक छोटी सी हम वीडियो देखने का सोच रहे थे, so but before we enter into that video, so मैं थोड़ा सा background maybe I'll just share. So this video is हम लोगों का केंद्र है यहाँ शकूरपुर में जोड़ो ज्ञान का, तो वहाँ पे this is a small interaction between a child and a teacher, एक sort of a one-to-one interaction था, just to understand कि बच्चा counting कैसे experience कर रहा है, क्या चल रहा है and all. So it's not a part of the proper classroom setup नहीं है, वो थोड़ा सा एक अलग से one-to-one interaction है, पर उसमें हम थोड़ा ये देख रहे हैं कि हाउ द चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग नंबर, है ना, बच्चे काउंटिंग को कैसे वो फील कर रहे हैं. बट बिफोर आई थिंक वी जंप इनटू दैट वीडियो, अगर आप लोगों का भी अपना जो एक्सपीरियंस है, हाउ डू यू थिंक बच्चों को काउंटिंग कैसे आती है, या टू बी मोर प्रिसाइज, अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी क्लास में ये बच्चा है जिसको काउंटिंग आती है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग अमृता नोज काउंटिंग, व्हाट डज दैट मीन दैट शी नोज काउंटिंग? Maybe anyone can share. Are the teachers there? कि वीडियो भी ऑफ है, I don't know. Yeah. Yeah, maybe you can just repeat your question, na? Yeah. I think. Yeah. So I'm just saying कि we are going to watch a video, but before we watch that video and try to understand how that child is experiencing numbers and counting, थोड़ा सा अगर हम ये लेके अपने एक्सपीरियंसेस से सोचें, when जैसे निम्मी मैम बोलती हैं कि मेरी क्लास के बच्चे को, निम्मी मैम ने मेरी क्लास के इस बच्चे को काउंटिंग आती है, तो उसका क्या मतलब होता है काउंटिंग आती है ना? हाउ डू यू से कि हाँ काउंटिंग का जो अंडरस्टैंडिंग है वो उस बच्चे में है, या इज इट? Yes, counting means that writing of counting formation and relation with objects. Relationship with object is very important. Otherwise, counting doesn't means it's not having any meaning to count. Only the formation and object counting कर पा रहे हैं, writing आ रही है, उसको formations आ रही है. When he is able to count and he is able to recognize and the number with the counting, like he is speaking one, then he is going to relate with that number, that how one look like. So yes, and how many. Sorry, can you just give an example? Sorry, sorry, Neha, please. No, that's Komal ma'am, right? No, Komal ma'am, who was saying. Can you just Seema ma'am, can you just share what you were saying? Maybe एक example के साथ अगर आप बता सकते. Yes ma'am, I'm just saying that if the child is speaking, child is saying this is one, I have one phone, so he is able to relate this one phone with the number one, the formation also, and when he is speaking the quantity also and the formation also. That number one is look like this, the single standing line. Symbol you mean? Okay. Yes. Along with symbol, he should know the quantity that these are two phones. So these are two. He cannot say it one. I mean the quantity should relate it to the quantity. Okay. So one we are saying that the symbol is there. Another we are saying that quantity aspect. Quantity, yes. Related to object. Okay. And what Vijay Lakshmi ma'am was also saying, somewhere the child should be able to do object count. Both the things and plus formation. Plus formation. Okay. Anything else? Anyone else wants to add to this? तो मतलब अगर बच्चा लिख पा रहा है तो यानी लिख पा रहा है और क्वांटिटी की सेंस है उसको, तो यानी काउंटिंग आ रही है. हाँ, ओके, तो ठीक है, मे बी वी कैन टेक अ मिनट एंड अगर कुछ और है तो वी कैन ऐड. ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे खत्म हो गया है, इट्स नॉट द एंड.
So let's have a look at this video also. Yeah, Amita, can you share? And then we'll come back to this idea. Which part is more? Okay. What else? Anybody else? Anybody saw anything else in the way the child was responding? Estimated and then he counted also. When the teacher asked that how Sorry? do you first he And then he counted. When the teacher asked how do you know that Amita, am I audible? More objects. Hello? Okay, so first he estimated. Yes, Neha, you're coming in thoda delay mein. So Pooja ma'am is sharing that first they estimated and then he counted also. He counted and then what did he say afterwards, after counting? They were doing comparison. They were comparing and saying थोड़ा सा ज़्यादा. Yeah. तो जब उन्होंने सवाल पूछा, टीचर ने क्या सवाल पूछा बच्चे को? कितने ब्लॉक्स? तो उसने क्या बोला? थोड़ा सा इसमें ज़्यादा. He was counting and he was forgetting the numbers. कि कितने numbers हैं total? Recognition. बहुत ज़्यादा थोड़ा. Just focusing on those two words. क्यों? आपको क्यों लग रहा है? Vijayalakshmi ma'am has a hypothesis that maybe he was forgetting. Yeah. What do others think? जब टीचर ने पूछा पहली बार कितने हैं तो उसने क्या बोला? ज्यादा. फिर then again she asked him, अच्छा तो कितने हैं? Okay, बहुत ज्यादा है. तो कितने हैं? Then what did he do at that time? Counting. No, he said बहुत ज़्यादा. उसने बोला बहुत ज़्यादा है and then he started counting. फिर से पूछा तो अच्छा उसको. Value perception of counting was observing and then answering. Later on he went on counting when he was triggered by this teacher. So one thing is that the child has the sense कि ये ज्यादा है ये कम है, right? But क्या हम बोल सकते हैं कि इस बच्चे को जो है वो कितना था? वो 8 था ना? 8 का आइडिया है? Does the child know counting up to 8? What do you think? What would you say? आप क्या बोलेंगे? क्या इस बच्चे को आता है काउंटिंग 8 तक? He was able to do the counting. He was knowing the sequence also, so that he can gain it with the repetition of the same work. If he will do counting of different objects, then only he will get the sense of
and उसमें थोड़ा सा problem है. But actually the child is able to match and say 1, 2, 3, 4, 5. But that's an issue. So you'll see that there's a slight lag when he says 5 and the thing, but he does say 5 for the. Okay. So one thing is that some of us are saying that he was able to count, so he knows the जो words है 1, 2, 3, 4, मतलब वो बोल तो पा रहा है. He also knows the sequence, but he doesn't have the idea of the number. ऐसा करके अभी किसी ने बोला है. What do others feel? क्या बोलेंगे इस बच्चे को आता है counting? Everyone is thinking. Maybe you can share what you are thinking also. अगर आपको थोड़ा कुछ सवाल भी आ रहा है, then that's also okay, right? तो आपको लग रहा है बच्चे को काउंटिंग आती है? The child is. Not that much perfectly, but he knows the counting. And he is able to count. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट जो हम लोगों ने किया था, आप लोग बोल रहे थे कि बच्चे को क्वांटिटी सेंस होना चाहिए एंड नंबर फॉर्मेशन या सिंबल की बात कर रहे थे ना. तो हम सिंबल फॉर्मेशन या उस पर तो नहीं जा पाए, वी कुडंट कैप्चर दैट है. तो अगर मैं क्वांटिटी सेंस की बात करूं, दैट वाज वन ऑफ द आइडिया यू वर शेयरिंग ना, कि अगर बच्चे को काउंटिंग आता है मतलब कि क्वांटिटी का सेंस आता है. तो व्हाट डू यू थिंक? तो उस क्राइटेरिया से मैं देखूं अगर, तो क्या बोलूंगी मैं? Then he knows the counting. He knows the counting. Okay. तो वो जब आपने मुझे बोला कि कितना है, ये 2 है, तो यहाँ पे जब मैं बच्चे से पूछ रही थी टीचर ये कितना है, तो बच्चा क्या बोल रहा था? बच्चा बोल रहा था ज्यादा है. ज्यादा है, कम है. काउंट नहीं किया था ना, तब तक उसने काउंट नहीं किया था. There he was just observing. Okay. There he was just observing. When he count, then he was able to know that it is 8 and it is 5. Really? Was he able to know? Yes. Yes. If that was the issue of video, then then he is able to count. अगर वो वीडियो का इशू नहीं है तो वो काउंट कर रहा था. Yes. Okay. तो कितनी बार गिना था उसने? वो जो पहला सेट था जिसमें 8 थे, ट्वाइस सीमा मैम से 2 times. 2 times. और दोनों बार टीचर ने इससे पूछा था ना इसमें कितना है, तो बच्चे ने ऐसे झट से बोला 8 है. पहली बार गिनने के बाद जब दोबारा टीचर ने पूछा कितना है, तो बच्चे ने झट से बोला होगा ना 8 है. नहीं, उसने बोला बहुत ज्यादा है. मैम उसने एग्जैक्ट नंबर दोनों बार नहीं बोला, दोनों बार यही बोला बहुत ज्यादा है. Okay. That's why he was not having number sense. He was able to count and he was able to tell the numbers in sequence. But उसको number sense नहीं था कि 8 है तो 8 कितना है. तो जो आप क्वांटिटी बोल रहे हो 8 कितना है, वो आप कह रहे हो कि शायद नहीं था, बट वो काउंट कर पा रहा था. हाँ, पर वो सीक्वेंस में सीरियल में काउंटिंग उसको, या ये कह लो कि उसे रोड लर्निंग थी काउंटिंग की. यानी एक हमने थोड़ा और तोड़ दिया इसको ना, अभी एक पॉइंट और आ गया है कि सीक्वेंस भी आ रहा है बच्चे को, और ओरल और ऑब्जेक्ट का काउंटिंग भी तालमेल के साथ वो कर रहा है, पर कितना है पूछने पे वो क्वांटिटी का सेंस शायद वो कनेक्ट नहीं कर रहा है ना. ओके. एक्चुअली शायद अगर हम इसमें देखेंगे भी ना, अगर उसके पास ये ब्लॉक्स हैं एंड व्हेन वी आर सेइंग कि अच्छा ये कितना है, सो द चाइल्ड इज सेइंग कि ये 1 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8. अच्छा ये कितना है. सो व्हेन यू आर सेइंग कि जो विजयलक्ष्मी मैम बोल रहे हैं उसका अगर बच्चों को बोलना है तो उसको कहीं पे बोलना है कि ये इतना सारा मैंने गिना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 सिर्फ ये नहीं है ना, 8 एक्चुअली ये सब को मिला के अभी ये 8 हो गया ना. सो व्हेन आई एम डूइंग द
काउंट करने के बाद ये मुझे पता चलता है कि ये कितना है, और वो ये अभी जो मैंने बोला है ये सीक्वेंस में बोल के जो मैंने खत्म किया है वहां पर आता है, राइट। ये कहीं पर एक आइडिया है, बट ये शायद हम कहीं पर बच्चे को ये इट्स नॉट लाइक आई थिंक लाइक व्हाट यू वर आल्सो सेइंग, इट्स नॉट समथिंग व्हिच यू कैन टीच अ चाइल्ड ना, रोट लर्निंग से तो ये आएगा नहीं। तो ये एक्चुअली एक बच्चों को आना है, उस बच्चे के लिए आना है, एंड आई थिंक एज वन ऑफ यू वर सेइंग आल्सो उसको शायद और भी एक्सपीरियंसेस होगा, तो वो शायद बोल देगा कुछ टाइम के बाद, कनेक्ट कर लेगा कि अच्छा जो कर रहा है उसको, क्योंकि वो एक आइडिया था ना, जब पूछा कि कैसे पता करोगे, सो ही सेड गिन के ना, so he has this idea that counting is the tool to find out. Yes, Vijayalakshmi, please. He has to repeat this again and again. He has to repeat this activities again and again. Only then he will able to get that number sense. Yeah. So repeat it again and again, but repeat it again and again in the kind of with what kind of different activities? objects. With different objects. Yeah. With different kind of objects and with the kind of experience that we're saying, in which he's fully engaged, when he's fully participating. No? Yeah. So I think maybe what Neha was also trying to say was, I think the fact that there are many kind of stages, right? When we are talking about this idea, what you're saying, number sense, a very early number sense, not number sense ki bahut zyada kuch, but even very early number sense ki baat kar rahe hain, to understand how much is 20, to have that sense of what is 20, to have a sense that, oh, 20 is so much, to have that kind of a sense, your children actually go through a lot of stages to reach there. हमारे लगता है क्या है, काउंटिंग है, उसको नाम नंबर नेम सीखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, but if you look at it, actually it's not a very simple idea na, as we are, one is that we are saying that ये हो रहा है, तो the child really needs to develop this idea कि अच्छा मैं गिन के, मैं जो लास्ट में बोल रहा हूँ वो पूरे का एक ये चीज है ना, ये पूरे का गिन के एक हिसाब मुझे बता रहा है कि ये कितना है, so that for it to develop, it has to really go through its own kind of a thing. And then there are further things also. When we ask them, अच्छा मुझे दे दोगे, तो बच्चे कैसे respond करते हैं? Maybe they may not respond in that. So they may be able to say कितना है, but they may not be able to do further things. There are many kind of stages in which it actually goes through, when they're even able to consolidate and say कि अच्छा मुझे बच्चे को जो है 10 तक या 12 तक या 15 तक का एक number sense है. So Neha, should we kind of like move further? Yeah, I think Pujati is there ready. So maybe she wants to talk a little bit more. Pujati? Okay. Yeah. Good afternoon, teachers. So, I was listening to all of you, Shubhomita, Neha, and Amrita, and all teachers also shared. So, जैसे भी हम सब ने बात किया, हम देख सकते हैं ना अर्ली नंबर सेंस में काउंटिंग के कितने मायने हैं. So there is a very importance of this idea of number sense ना. And when we talk about counting, so we can see counting के भी अपने अलग अलग levels हैं ना. And what जैसे अभी हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ की बात की, लाइक शुभमिता शेयर्ड वन एक्टिविटी, Amu and she shared a small context, and then you all made something, and then to know how many pieces are there, so everybody was checking. And also Neha, she just shared two piles of jodo blocks, and then which is more, which is less, so you all were guessing, but when the quantity is less, we can say this is more, this is less, but then when it becomes quite more, then we need to check and say अच्छा इसमें कम होगा या इसमें ज़्यादा है. So basically when we talk about number, the basic idea is quantity ना, जो कि हम अभी काफ़ी देर से बात कर रहे हैं. And this quantity can be experienced through counting only. एंड इट्स नॉट ओनली अगर बच्चे को लिखना आता है, बोलना आता है या नंबर रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो बच्चे को काउंटिंग आ गया. बिकॉज मेनी टाइम्स वी सी, इफ वी टॉक अबाउट ओरल काउंटिंग और अकाउस्टिक काउंटिंग, so they just say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, but we are talking about to associate this idea but count with by counting with objects ना, जो कि अलग अलग सिचुएशन में आ सकता है. इट कैन बी मेकिंग समथिंग लाइक आकार परिवार के साथ कुछ कुछ बनाया, अच्छा कितना है, अच्छा मेरे जितना है, मेरे से ज़्यादा है या बराबर है, तो एक पर्पस आ गया उसके बीच में ना, तो बच्चे काउंट कर रहे हैं. सिमिलरली if there are two quantities, which is more, which is less, then again you need to do counting. The idea of number sense basically is emerging through the use of counting.
and there is a purpose also. Counting can be done to know like it can be done to know and to compare also. एंड ऑल्सो दो क्वांटिटी अलग अलग हैं तो उसको भी जानने के लिए आपको क्वांटिटी काउंटिंग की जरूरत पड़ेगी. सो बेसिकली आइडिया अगर हम बोले नंबर, व्हाट इज नंबर ना, इफ लाइक पर्पसफुल काउंटिंग की अगर बात करें, सो आई हैव मेड समथिंग लाइक इफ अ चाइल्ड मेड समथिंग लाइक दिस, ओके व्हाट इज दिस, दिस इज अ बर्ड. अच्छा चिड़िया बनाई तो उसमें कितने टुकड़े होंगे. सो देयर इज अ पर्पस फॉर टू नो हाउ मच पीस, हाउ मेनी पीसेस आर देयर. ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके अच्छा तो अभी तो एक बच्चे ने बर्ड बनाई. ओ देयर इज अनदर चाइल्ड हु आल्सो मेड अ बर्ड. अच्छा अभी तो अमन ने एक बर्ड बनाया एंड लावण्या ने भी एक बर्ड बनाई. तो अभी आपको क्या लगता है विच बर्ड हैज मोर नंबर ऑफ पीसेस? तो कौन सी बर्ड में ज्यादा टुकड़े होंगे? देन अगेन देर इज अ नीड टू चेक एंड काउंट अगेन. अच्छा तो अभी हम इसमें भी गिन के देखें 1 2 3 4 5 6. तो इसमें तो 6 हैं, इसमें तो 8 हैं. तो अभी किस में ज्यादा है? तो दिस बर्ड हैज मोर नंबर ऑफ पीसेस. Similarly, it can be experienced through this way also. Okay, so this is more or this is more, or maybe if we take the similar number, so this is more or this is more. Maybe child can recognize the number, he can say this is more, or maybe there is a struggle kind of thing. But if we show by some object, then it is quite easy to understand. Okay, so this is more or this is more, or maybe if there is a confusion, then child can count also. Na, he can count and check, and then he get to know. Okay, so this is more or this is less. सो लाइक जैसे हमने अलग अलग नंबर्स के एस्पेक्ट्स की भी बात की. सो इट इज़ नॉट ओनली काउंटिंग. अगर बच्चे को गिनती बोलना आ गया या बच्चा देख के भी बता सकता है दो क्वांटिटी को, तो भी उसे काउंटिंग आ गया. बट देर आर अभी जितनी भी एक्टिविटीज हमने की, देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर कमिंग ना. एंड इट्स ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर इज एन आइडिया ना. नंबर ऐसा नहीं है जस्ट writing, this is a representation only, but number is an idea which can be experienced through activities, through context, through stories. जैसे हमने थोड़ा सा भी शेयर करने की भी कोशिश की है. and if there are some meaningful context, children can learn happily. So there is meaning in that activity na, and they can come up with different answers. If there is a meaningful context, they can come up with different answers. So it's not only right or wrong answers, it's about the process na, how they respond. The conversation is very important. तो हम ये नहीं बोल रहे कि रिजल्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट द प्रोसेस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. सो moreover, like overall we can say, so number sense goes through different aspects, through different processes, there are different stages. So and the significant the more significant part is it cannot be teach directly. We need to do some meaningful, we need to design some appropriate activities, some meaningful context, some meaningful conversations. And this is the process, some glimpses of processes which we shared. But now there is a small question. So we spoke about many things now. There is a kind of discussion. Yeah, I'm just coming, just winding up in 1 minute. So what are these different stages or aspects? तो ये क्या क्या है नंबर्स? अगर हम बोलें अर्ली नंबर्स, अर्ली ईयर्स में बच्चे को नंबर से जोड़ के आना चाहिए. काउंटिंग तो बहुत आ गया अभी, काउंटिंग काउंटिंग हमने बोला, बट व्हाट अदर एस्पेक्ट्स आर देयर? या अमृता, मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम जस्ट वंडरिंग, क्योंकि काफी सारी बातचीत और डिस्कशन हुई है, and I can see that little bit, maybe many different ideas I think that we have also talked about. So I think we need to talk about this more ना, कि ये कितने कितने क्या क्या अलग अलग aspects हैं और वो कैसे कैसे आते हैं. But maybe shall we keep that for another time? And I think the kind of one idea that we are seeing is that for children, these which are the kind of activities, contexts within which children can really participate now for our young children, and how they need to be brought in, with the way numbers come in also in a very kind of a subtle kind of a way. And really the importance of giving मीनिंगफुल काउंटिंग एक्सपीरियंसेस ना. हम ऐसे ब्लॉक्स पकड़ा के उनको बोल दें अच्छा गिन के बताओ कितने हैं,
So maybe as an assessment question or something, it's very different, but we can't keep asking that to children every day. No, that's not something we can say. They give blocks. It can be hands-on. Blocks de diya, Aakar Parivar de diya, but that's not really the purpose. The purpose is to make it so that they can really engage in meaningful kind of an activities using hands-on materials, using materials which can provide hands-on opportunities. But the point is meaningful and meaningful for children. What is meaningful for children? And what is meaningful for children is very much connected with stories and animals and their friends and all these kind of things. So how to bring all that also into our classrooms and plan the activities is kind of what we are thinking about. And the many opportunities are needed, and to be really observant to see. जैसे एक बच्चे का इस बच्चे का हमने एक छोटा सा वीडियो देखा. I think I'm stuck. We can hear you, Amrita. Okay. Yeah. So just as we saw this small video and we saw that the child whom we could have otherwise said कि उसको तो counting आता है, but थोड़ा सा when we observed closely what we could see, right? So observing children to actually see where they are at and then to see what is the kind of support that needs to be also provided. Yeah. Neha, would you like to add something, or maybe the teacher? Yeah, I think we are almost approaching the end of the session also, right? So we'll not do something new and all. Of course, we are going to meet during the year also, and we'll take up many of these ideas which we have talked today, right? So I think I'll just try to list down few ideas that we spoke, right? So जैसे अभी Amrita was also saying, connecting to children's life, right? तो बच्चों की दुनिया में जो है कहानियां हैं, गेम्स हैं, talking from there and वहाँ पे नंबर्स आना और ऐसे आना कि बच्चे, जैसे आप लोगों ने बोला कि बेस्ट होता है कि बच्चों को पता भी नहीं चलता है और नंबर्स आ गए, है ना? और उसी के दौरान बच्चे जो हैं ये क्वांटिटी सेंस एंड डिफरेंट स्टेजेस में एक्सपीरियंस नंबर एंड मेक देयर ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. तो आई थिंक अभी हम इसी आइडिया पे आज का सेशन थोड़ा क्लोज करते हैं. या इज दैट ओके? मुझे काफी लोग ऐसे थके हुए लग रहे हैं थोड़ा. So maybe, and we'll meet again and we can talk a little bit more detail and see how it goes. Yeah, is that okay, everyone? Okay. Okay. Chalo. Thank you, teachers. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much. End the meeting.